Marsha, can you hear me now? Yes, sir. All right. I'm going to use this microphone now. Okay, yesterday we did this reflection of light and we talked about the reflection in a plane mirror. So any questions about that? Okay. We were just discussing the properties of image formed in a plane mirror. We just discussed that image formed if you just write your name in front of it, then it appears laterally inverted. Right? One thing. We have discussed all this yesterday. It's just a quick review so that we can connect with today's session. The second was image formed is as far behind the mirror Sir, same distance, right? Yes. As the object is in front of it. That is image distance is equals to object distance from the mirror. ये दो चीजें yesterday we discussed. ठीक है? Okay. Somebody asked me what is upright. If you just tell me what is inverted, what do you mean by inverted? Ji, Hadi? Flip, upside down. Okay? Upright means straight up. So the image formed in the plane mirror is laterally inverted and it is upright. Upright means as you appear in the mirror, you are just straight up, but your right side appears the left side in the mirror. That's what we call laterally inverted. The A, it is upright, appearing in the image. It is not inverted. It would have like this. Oh, inverted. This would be the inverted form of this A, but this is not the case. All right. So, anything else which we can deduce from the image? What about the size? Yeah. Remember, we are talking about the characteristics of image formed in a plane mirror. It is not curved where we have like magnified or diminished images. So third is size of image is equals to the size of object. Why I'm writing here like size of the image first and then size of the object? Can't it write? Can't it be like size of the object is equals to the size of the image? वो भी सही है, but why I'm doing so?
मानूर, सर पता नहीं. ऊपर हेडिंग क्या है? रीड द हेडिंग. Properties of Image image. formed in plane. That's why we are writing the image first, remember. So all these points, they should be in terms of image, not the object. ठीक हो गया? कोई और चीज which you can determine out of this? Size, distance, colors. All right, Hadi, what do you think? कैसा color आएगा? नहीं, when you stand in front of the mirror, तो आपकी image कैसी वहां पे appear होती है? Imagine that and then talk about it. Same size, ठीक है? Same distance, same color. But what you are trying to say here is nature. Now I'm just going to rub it because this is the last property. So fourth one, I'm just writing it here. Let me put the boundary mark here. This red one is the boundary mark. Okay. What Hadi is trying to tell us is he's not thinking about the color, he's thinking about the nature. What do you mean by this? By nature. What is the nature of the image? Image. When we are just discussing, let's suppose about our friends, sometimes we say that uski nature badi achhi hai, good nature. What do you mean by that? I'm sure you people got friends who got good nature. When you are saying nature, तो उसमें क्या consider करते हो? What do you consider in that? जी महादेव. Can sing. जी. All right. Tolerance. Patience. All right. हाँ जी. Tone, polite tone. कौन सा? Overall अच्छा है. Appearance भी, personality wise भी, और style भी. All right. बिल्कुल ठीक है. शाबाश. Very good. So these are different characteristics which you consider as the nature of your friends. Here, when we are talking about the nature of the image, we have just two types of images in terms of nature. One is virtual. And the other is real. कोई मुश्किल नहीं है, वेरी इजी. आप लोगों की वर्चुअल क्लासेस होती हैं और आपकी रियल क्लासेस भी होती हैं. इट्स द सेम केस हियर. ऑलराइट, इन टर्म्स ऑफ इमेज, virtual image just appears in the mirror. You cannot take it out. We cannot form it on any screen. But the image formed by this multimedia, by the camera, we can take it on any of the screens. We can make it on this whiteboard or even on that screen or on the wall. We can take it anywhere. Okay? It means the image formed in the mirror and the image formed by a multimedia, they both have different natures. Right? The image formed by mirror is virtual because it cannot be taken on a screen. Image formed by multimedia is real because we can form it, because we can take it on any of the screens. Out of mirror. That means cannot be formed on a screen. और इसका मतलब है real image can be formed on a screen. When I'm saying screen, I mean wall,
any sheet, cloth, or even the retina of our eye. ठीक है, और द फोटोग्राफिक प्लेट जिसमें एक्सरेज बनते हैं, द पिक्चर्स बनती थी पहले जमाने की, तो दे ऑल वर रियल, अभी भी हैं रियल. And the things, I mean the images which is formed in the mirror which cannot be taken out of it, that is the virtual image. समझ आ रहा है? रियल और वर्चुअल कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? शाबाश शाबाश. मानूर, वर्षा. Yes, sir, I understood. सर बस समझ आ गया, इतना कुछ खास नहीं, लेकिन ये सिर्फ ये एक बच्चा सच बोल रहा है, बाकी सब गप्पे लगा रहे हैं मेरे साथ. इट्स ऑल रिटन ऑन योर फेसेस. चलो एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि पक्का समझ में आ जाए. एग्जांपल नहीं, आइडेंटिफिकेशन. वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड ऑलवेज, इट फॉर्म्स अपराइट, सीधी बनेगी, अपराइट virtual image. So whichever image is upright, you can bluntly say that it is virtual. मिरर में upright बनती है, कौन सी होगी? Thank you very much. Real image is always inverted. मैं इधर भी लिख दूं. ठीक हो गया? अब समझ में आ जाएगा, भूलेगा तो नहीं. ये कहां पर काम आएगा? When we will be drawing the images. जब हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, over there I will ask you to identify the nature of the image. Then you have to tell me whether it is real or virtual. Identification मैंने आपको बता दी है. Real can be taken on a screen. It is inverted always. Virtual cannot be taken on a screen. It is always upright. मानूर समझ आ गया बेटा? यस सर. सर आप जरा अपराइट और इन्वर्टेड की कोई एग्जांपल दे सकते हैं ताकि जरा और समझ आ आप जाए. कैसे खड़े होते हो मिरर में, कैसा अपना आप नजर आता है आपको? सीधा या उल्टा? सर ऊपर ही होता है या सर नीचे हो जाता है? सर स्ट्रेट ही. वो है अपराइट. अगर कोई बंदा सामने खड़ा और उसकी टांगे उसको ऊपर नजर आ रही है और सर नीचे नजर आ रहा हो, तो वो होगा इन्वर्टेड. ठीक है? Sir, but when we take a picture from a camera, I don't see any pictures which are inverted. Like शाबाश, कोई भी मतलब उल्टा नहीं खड़ा होता. बिल्कुल सही है. एंड आई टोल्ड यू कि रेटिना भी हमारा स्क्रीन है, तो हमारी आई देखती है तो हमें तो सब सीधे नजर आते हैं, उल्टे क्यों नहीं नजर आ रहे? इफ द इमेज इज फॉर्म्ड इज रियल बिकॉज इट इज फॉर्मिंग ऑन द स्क्रीन. रेटिना इज द स्क्रीन, तो रियल इमेज होएगी ना वो, तो हमें उल्टे क्यों नहीं सब नजर आते? और ये सर तो रेटिना मल्टीमीडिया जो है वो मल्टीमीडिया से जो इमेज यहाँ पे आएगी इन्वर्टेड. वो भी सीधी नजर आती है, उल्टी नजर नहीं आती है. जी हाँ दी, दिमाग फ्लिप कर देता है, बल्कि दिमाग से पहले ही फ्लिप हो जाती है वो. रेटिना स्क्रीन पे सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, न्यूरॉन्स उनको लेके जाते हैं टुवर्ड्स द ब्रेन, और ऑन द वे इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड वो उसको इन्वर्ट कर देती है. सो यू, आई मीन द पीपल अराउंड अस दे अपीयर अपराइट. एक्चुअल में उनकी इमेज कैसी बनती है? इन्वर्टेड. कैमरा में बेटा उल्टी बनती है, उसको हम सीधा करके देख लेते हैं. ठीक है? आजकल जो कैमरास आ रहे हैं डिजिटल और ये मल्टीमीडिया, इनके अंदर ही सिस्टम उन्होंने बनाया कि जब वो आउटपुट दे तो उस इन्वर्टेड को एक और मर्तबा वो उल्टा कर देते हैं, तो डबल इन्वर्जन कर देते हैं, तो वो सीधी नजर आती है. ठीक हो गया जी? वर्षा, क्लियर बेटा? Yes, sir. शाबाश, गुड. प्लीज डू आस्क मी क्वेश्चन. जैसे खामोशी से बैठे रहोगे तो मुझे पता है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा और आप पूछ भी नहीं रहे हो, मुझे से सब पता लग जाता है. So please ask me. So 4 things we have just discussed. I'm not repeating them because I've already repeated them. एक नजर देख लो. If you got any questions, ask me. ओहो, ये तो बताया नहीं कि नेचर क्या होती है.
इज इट रियल और वर्चुअल? कौन कौन कह रहा है वर्चुअल? हाथ खड़ा करो जरा। दो लोग। हाँ जी, वर्चुअल है रियल है? तो रियल के भी कोई नारे लगा रहा था यहाँ पे। हाँ, आ रहे सब? जरा एक्टिव हो गए बैठने। The image formed in the plane mirror is virtual in nature. ठीक हो गया जी, ये चार प्रॉपर्टीज हैं, देख लो इनको। उतनी देर में मैं जरा हामिद भाई के साथ सेल्फी बनूंगा। ओके, कैन आई रब इट नाउ? ऑल राइट। अब थोड़ा सा हम इनकी जरा सी एप्लीकेशंस वो जरा चेक करने लगे हैं। अब तक जो हमने पढ़ा है, द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव एक्वायर्ड, वी आर नाउ गोइंग टू अप्लाई देम इन डिफरेंट सिनेरियोज। Let's suppose you are just sitting in a barber's chair having your hair cut. There's a mirror in front of you and you are just sitting like 2 meters away from this mirror. How far your image will form from your eyes? From your eyes? 4, sure? Why 4? Madeh, 2 here and 2 inside the mirror. So 2 plus 2 altogether 4. ठीक है ना? शाबाश, good. Let's suppose there is a picture frame at the back of this wall, at your back on this wall. कोई भी सीनरी मिल रही है, which is 5 meters away from you. How far this frame will appear, how far it will appear from you inside the mirror? सोच के बताना, हमें नहीं गप लगनी चाहिए। From here, how far this frame will be in the mirror? भाईजान, आपकी आंखों से ये फ्रेम मिरर के अंदर कितना दूर बनेगा? मैं लिखता जाऊं यहां पे, कितना जी? 9 meters? कोई और डिफरेंट आंसर इससे? बिकॉज दिस इज रॉन्ग। 7 meters, ये भी रॉन्ग है। 9 किस किस का है? मैं उस पर टिक लगाता जो। और हम 11 आदिया का। 7 किसने बताया था? हारिस ने जी। किसी का आंसर इन तीनों के अलावा हो? गैस लगाओ Sir, यार। 10 wrong क्यों? meters. How much बेटा? 10 meters maybe. 10 meters. सर आई थिंक 11। एक और है, ठीक है। हारिस, तो चौहान 9, ओके, ठीक है। आइए, हाउ यू हैव डिटरमिन दैट? व्हाट वाज द सेकंड प्रॉपर्टी? क्या थी वो? ऑल राइट। तो पहले तो ये बताओ कि ये कितना दूर बनेगा? ये टोटल डिस्टेंस इसका मिरर से कितना है? 7। तो ये उसके अंदर 7 बनेगा। 7 मीटर्स होगा कि नहीं होगा? यहां से, अब आइस से यहां से ये भी उसमें ऐड होगा ताकि ये 7 को देख सके। दिस इज हाउ मच? 2। तो 2 प्लस मेक्स, ऑल राइट। जिन बच्चों का ख्याल था 7, आपने सही सोचा। क्यों? उसका रीजन क्या है? वाई 7? कोई बात नहीं, गलत हो गया तो फिर क्या हो गया? कुछ सोचा तो होगा ना, वो बताओ। किसने कहा था 7? जी हारिस, आपने 5 और 2 को प्लस किया था, यहीं से आप इधर तक जा रहे थे। ओके,
ठीक हो गया, अब समझ आ गया बेटा। 11, who was the 11? जी हाँ दिया। अच्छा 2 + 2 4 + 7। जब आप 2 पे गए यहां तक और 2 यहां से वापस आ गए तो आपने ये ऑलरेडी इतना डिस्टेंस तो कवर कर लिया था। अब आपने उसमें क्या ऐड करना था? 5 ऐड करना। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है जी। 10 Sir, समझ I आ, misunderstood the question. ऑल राइट, ओके, यू गॉट इट नाउ। बड़ी Yes, sir. एग्जांपल्स हैं बेटा, फिक्र नहीं करो तुम। ओके डिस्टेंस समझ में आ रहा है किस तरह से आपने करना है। सेकेंडली आपने लेटरली इन्वर्टेड अपना नाम पाकिस्तान या जो भी है उसको कैसे आप कर लेंगे। ठीक है। तीसरी चीज, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? इर्तजा। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था भाई? इर्तजा बताएंगे ना। हाँ, बाउंस बैक करके किस एंगल के साथ? 90 डिग्री के। और दोनों एंगल्स क्या होते हैं? ये ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज द फर्स्ट लॉ। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू angle of reflection. Isko, this property we are going to use now to see what's happening here. Okay, let's suppose you are standing here. This is the mirror in front of you. ये ग्राउंड है, लेवल, यहां तक मिरर लगा, वो आपसे ऊपर भी आ रहा है। ठीक है, तो वॉल है पूरी की पूरी मिरर, राइट? यू आर मैं इसको राउंड ले रहा हूं इसलिए प्लीज 6 फीट टॉल, एग्जैक्टली 6 फीट यहां तक। ठीक है, 6 feet tall. All right. Okay. Your eyes, they are 3 inches below your head. This top head से 3 inches नीचे है. All right. Approximately. Okay. Now, if you have to see your feet, all right, this foot, okay, this one, where you need to look at the mirror. If you want to see this, the laces of your shoe, let's suppose this one, where you have to see or look at the mirror, where they will appear. Here, 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 or here. This is A, B, C, or D. At which point you will look at the mirror to see your laces in it. सर आई थिंक डी ही, क्योंकि जो इमेज फॉर्म्ड होती है मिरर में। जी, सी कौन कह रहा है? सी। आरएस। डी, बी फॉर बॉय, अरहम, मादे, हादी एंड हादी। ए, मानूर, यू थिंक एट डी? हारिस, चौहान साहब आपका रिस्पॉन्स नहीं आया। डी। और इर्तजा जी, मानूर का हो गया। मर्शा? Sir, I think D. डी। ऑल राइट, ओके। When this person is going to see D, यहीं से स्टार्ट लेते हैं। I have to draw a normal at the point D.
Let's suppose this is the normal. Let's suppose it is the normal. So this angle should be equal to the angle of reflection. वो तो फिर ये यहाँ पे जो भी dust particle या कुछ है वो नजर आएगा. ठीक है, तो डी तो क्लियर नहीं. केस विद जी, फिर वो कहाँ जाएगा? इधर. ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया. दोनों एंगल सेम होने चाहिए. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ, ये भी नहीं है. बी. और ए पे क्या होएगा? नहीं, वो इधर की इसको अपने कॉलर्स नजर आएंगे शायद. सो द करेक्ट point at which this person should look is B. जी समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, गौर से देखना. What I remove this mirror. कुछ होएगा? मुझे अपने पाँव नजर आ रहे होंगे? Yes or no? What if I No. just want to see the top of my head? Oh, sorry, 3 inches. My eyes, they are 3 inches down from my head top. Now, what if I just wanted to see this, let's suppose यहाँ पे कोई बाल है, उसको मैंने ठीक करना. Where should I see? A, B और C. हाँ जी, अब थोड़ा सा, हाँ, it requires your full attention. Probably जो people online, they wouldn't be able to see these 3 points clearly. Maybe yes, maybe no, but people sitting here can see it clearly. So A, B or C? B. Thank you very much. Shabash. All of you are correct. थोड़ा सा आंखों से ऊपर. ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा ऊपर और यहां से थोड़ा सा ऊपर. राइट? ओके, गुड हो गया, वेरी गुड. लो जी, आई हैव रिमूव दिस मिरर एज वेल. कैन यू फिगर आउट द लेंथ ऑफ दिस रिमेनिंग मिरर? Length of the mirror required to see complete image. What is the length of this mirror? Left. Calculate कर लो, कॉपी पे लिख लो, जो भी है बताओ ताकि मैं यहाँ पे लिखूं. हाँ बिल्कुल, अभी 1 सेकंड में पता लग गया. एग्जैक्ट, एक्यूरेट निकालना है, एस्टिमेट नहीं. कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक है. आपकी हाइट टोटल कितनी थी? 6 फीट. ठीक है, तो आपने पांव देखने के लिए कहां से देखा होगा? 3 पे. मेट, ये 3 हमने नीचे से गायब कर दिया. अब ये रिमेनिंग 3 में से आपने अपने आईज विच आर 3 इंचेस लेस, तो यहां पर आपने स्ट्रेट देखा था, टॉप पे देखा था, या बिटवीन देखा था? तो यानी 1.5 इंचेस लेस.
नीचे देखा था ना आपने, ताकि आपको 3 इंचेस ऊपर नजर आए। तो हम ऊपर से भी 1.5 इंचेस माइनस कर सकते हैं। तो कितना बच गया? 2 feet 10.5 inch। इतना लंबा मिरर चाहिए टू सी योर हाइट पर। जी जी हादी, सर कैसे? मैं इधर ही हूं बेटा, मैं सबके आंसर्स देके जाऊंगा, फिक्र नहीं करें जी। देखें ये है, मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर दूं। दिस इज योर हेड, दीज आर योर आईज, ठीक है, दिस इज योर हेड। आपने यहां पर देखना है, ये मिरर है। इन दोनों के सेंटर में इस जगह पे आप देखोगे ना, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल बनेगा। तो आपने इधर देखा और यहां से ये इधर देखा, ठीक है। तो यहां तक यानी इसके सेंटर तक आप गए ना, यहां से ये सेंटर यहां तक, ऐसे ही होगा ना। होए होए, तो सॉरी, यहां तक जाना, ओके। ठीक हो गया। आई से मिडिल में देखा आपने और ऊपर चला गया, बिकॉज ये जो एंगल्स हैं ये और ये मिला के ये टोटल बनना चाहिए, इसलिए आप यहाँ पे इसके हाफ पे देखेंगे, ठीक है। गॉट इट जी। मानूर, योर क्वेश्चन। सर मुझे समझ नहीं आया कि अगर 6 फीट है हाइट तो फिर हमें 2 फीट का कैसे चाहिए होगा मिरर? आपने अगर अपने पाँव देखने हैं तो 6 फीट की अगर आपकी हाइट है तो मिरर में किस पॉइंट पे देखेंगे आप? मिडिल में। यस सर, मिडिल में। तो वो 3 फीट नीचे वाले गायब हो गए, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना भाई। अगर नीचे यस का सर। शीशा मैं मिटा हटा भी दूं, दैट इज यूजलेस, हमने वो काट दिया। तो 3 फीट तो वैसे ही चलेंगे। ऊपर आपकी आंखें आपके सर से, टॉप हेड से 3 इंचेस नीचे हैं, तो इसका हाफ कितना होएगा? 1.5, वो भी हम माइनस कर दें मिरर का। तो इस मिरर के अंदर आपकी पूरी की पूरी इमेज आ रही होगी, और उसकी हाइट कितनी होगी? 2 feet and 10.5 inches। अनूर समझ आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। ऑल राइट जी बेटा। अभी इसकी एक और एग्जांपल है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। ये थोड़ा सा मैंने आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए वाली मुश्किल एग्जांपल दी, ओके जी। नहीं नहीं, हमने अपनी आंखें, अपना सर भी देखना है और अपने पांव भी देखने हैं एट द सेम टाइम। ये हमें पूरा कंप्लीट यहां से लेके यहां तक चाहिए। हाँ, ये नहीं चाहिए, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ये 6 फीट है पूरी, ये सर से नीचे तक आ रही है। ऑल राइट ऑल राइट। अभी अभी आपको वो क्लियर नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, फिक्र नहीं करो बेटा। लेट सपोज यू आर स्टैंडिंग हियर, दीज आर योर आईज, एंड देयर इज अ फ्रेम यहां पर आपके सर के ऊपर, या बल्ब है या एनीथिंग विच इज लाइक 2 feet away from your eyes. Remember, not from your head, from your eyes. This is the mirror in front of you. ठीक है? You are going to look at this point to see the top. ठीक बनाई है मैंने रे डायग्राम कि नहीं?
आप मिरर में इस पॉइंट पे देखेंगे एंड यू विल बी एबल टू सी द टॉप ऑफ दिस बल्ब और वट एवर दैट बॉक्स इज और द सीनरी इज। आदि ठीक है या नहीं? अगर आप यहां पर देखोगे बेटा इस पॉइंट पे, तो ये तो इधर कहीं जाएगा और ऊपर, वो तो रिक्वायर्ड नहीं है, हमें यहां तक चाहिए ना। इट मीन्स ये बाकी का मिरर तो फालतू एक्स्ट्रा, आई कैन रिमूव दैट। यस और नो? समझ आ रहा है? तो eyes were 3 inches down, so 1.5 inch was extra, so we eliminated that. ठीक, शाबाश। ऑल राइट जी मर्शा, एनी क्वेश्चंस? Sir, I have a question that इसमें तो फिर सबके answers different होंगे. Like everybody would have a different answer because कुछ कोई और मतलब जैसे आपने कोई और नंबर लिया तो कोई और भी तो ले सकता है. ऑब्जेक्ट की हाइट पे डिपेंड करेगा ना, वेरिएशन होएगी, जितनी हाइट होएगी उसके हिसाब से मिरर रिक्वायर्ड है। ठीक है, चलो एक और मैं क्वेश्चन करवाने लगूं, उससे और चीजें क्लियर हो जाएगी जी। एक वक्त में क्या, हाँ इंचेस 12, 1 फीट में, फुट में। ओके, imagine that this is a wall and this is a mirror. You are just standing in front of it. Now, you have to see, you have to look at this wall through the mirror, right? So, which is the closest point near to the mirror on the wall which you can see? इस दीवार पे कौन सा वाला पॉइंट है जो आप मिरर के करीब तरीन कौन से पॉइंट तक देख सकते हो? देखो आप यहां पर देख सकते हो कि नहीं, मिरर के थ्रू देख सकते हैं? मानूर, मर्शा, कैन यू सी दिस पॉइंट इन द मिरर? नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा? आएगा ना। और ये वाला पॉइंट, कैन यू सी दिस पॉइंट इन द मिरर? No. नो। मुझे ये बताएं, आई एम जस्ट प्लॉटिंग लाइक डिफरेंट पॉइंट्स ए बी सी डी, which one of them would you be able to see in this mirror? D. D, C, okay. Anybody for B? B, yes or no? All of you know? A, sure no. Okay, good. शाबाश, देखो जरा गौर से। For D, it appears here. ये normal, दोनों एंगल सेम, गुड। For C, shabash, excellent. This angle to some extent. Yes, good. What about B? This one? नहीं, इतना ही एंगल इधर भी बने, यानी कि वो इधर इधर कोई बंदा होगा तो वो देख सकता है। तो शाबाश, एक्सेलेंट। समझ में आ रहा है जी? मानूर, चौहान, मादिक, क्लियर है बेटा? शाबाश। So with this we have just concluded the reflection part. सिर्फ 2 मिनट या 2 सेकेंड्स मुझे दोगे? I just want to share how we can make the ray diagram. Let's suppose this is the mirror and this is the object. You are just standing here. How it appears in the mirror to you?
जहां कहीं पे भी हो भूल जाओ उसको, इसकी इमेज बना दो यहां पर, सेम डिस्टेंस सेम स्टाइल, यहां से आईज तक लाइन, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। बन गई? इसको हेड के साथ, इस पॉइंट को हेड के साथ कनेक्ट कर दो, इस पॉइंट को बेस के साथ कनेक्ट कर दो, इनको डॉटेड कर दो। दिस इज द रे डायग्राम। रेज सर ऑब्जेक्ट से आईज की तरफ जाती हैं हमेशा, लाइट आईज में जाती है, आईज में से नहीं निकलती, कार बीम नहीं आपकी आईज। ओके, रे डायग्राम समझ में आ गई है? इजी है, इसको भूल जाना है। सबसे पहले इमेज बनानी है और इमेज से स्ट्रेट आईज में, जिस पॉइंट पे वो मिरर के साथ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बना दो, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, दोनों एंगल सेम होंगे। ट्राई करना इसको आप लोग, ठीक है? सर जी मानो। सर वो जो वेव्स था हमारा